Assalamu alaikum, dear students. I hope that you are all safe and sound with the grace of Almighty Allah. And today I welcome you back in the second lesson of your textbook, which is titled as On the Grosshopper and Cricket. It is written by John Keats. But before moving to the lesson, let me tell you something about the period to which the author belonged. So, when we talk about John Keats, he was a romantic poet. Okay? So, I think that it will be appropriate to slightly just introduce what do you mean by romanticism. Okay? So, I have written here some few points. You need to note them down. Okay, the first point is that romanticism is an artistic, literary and intellectual movement. Okay, artistic, literary and intellectual movement. Number one, it began in Europe in 18th century. Okay, 18th century में शुरू हुआ कहाँ पे? यूरोप में. तो इसका मेन फोकस किस पे था? आर्ट पे, लिटरेचर पे और इंटेलेक्चुअलिज्म पे. आर यू गेटिंग मी? एंड मेनली इट एम्फेसिस ऑन इमोशन. इट एम्फेसिस ऑन, तो ये जोर देता है, एम्फेसिस देता है किस पे? इमोशन पे. इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. इट रेस्पेक्ट्स द इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके, and it portrays that emotion in the literature, in the romantic literature. It talks about human emotions. Number one. Number two is it talks about individualism. It emphasizes on individualism. It means that the valuest entity, are you getting me, in the society is an individual. सबसे ज़्यादा अहमियत किसको दी जाती है? इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल को. ठीक है, किसमें? रोमांटिसिज्म में. And next point is glorification of the past. अगर पास्ट में they praise the past, they talk about the glory of the past in their literature. Okay, who? Romantics. और एक important thing जो है, that is glorification of nature. When we talk about romantics, they praise nature. वो नेचर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं. If we talk about this poem on the grasshopper and cricket, it too belongs to romanticism and it is about nature. ठीक है, तो इसमें भी ग्लोरीफाई किया गया है किसको? नेचर को. ओके बेटा. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट आवर राइटर जॉन किट्स, ही रोट विद सम इम्पोर्टेंट एंड वेरी फेमस पोइट्स जो उसके कंटेम्पोरेरीज थे, को राइटर्स थे. उनमें से एक था बेटा लॉर्ड बायरन, BYRON, हाँ, लॉर्ड बायरन एंड PB शेले. ओके, तो आई थिंक you must have heard the name of William Wordsworth. He is considered one of the greatest writers of romanticism. याद रखिएगा. Are you getting me? तो जिस एज से वर्ड्सवर्थ बिलोंग करते थे, जिस पीरियड से वो बिलोंग करते थे, similarly John Keats belonged to the same period. Are you getting me? But unfortunately, it is very sad of John Keats because he died at the age of 25 only. याद रखिएगा बेटा. He died just at the age of 25 because of tuberculosis. Okay? Now, this is a brief introduction of romanticism. Inshallah, in the higher classes, you will read it in detail. And these were some few points regarding John Keats. Now, let's see what is there in your textbook. कुछ points यहाँ पे है. So, it is given here, lesson number 2, chapter number 2 on the grasshopper and cricket. But before moving to the lesson, here are 3 sections, connect, and it tells us that if you have had any special experience with nature, share it with your class. It could be about a place you visited, any creatures you saw, etc. But here is not any class. आप शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कोई ऐसी एक्सपीरियंस विद नेचर जो आपने एंजॉय की. कहाँ पे? नेचर में. फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी अबाउट ए प्लेस यू विजिटेड, किसी ऐसी जगह जो आपने विजिट की है,
any creatures you saw or any beautiful creature you saw. Okay, then in the reflect section, there is something: we all have busy lives today with so many things to do. As a result, are we missing out the joys and beauty that nature has to offer? Write your thoughts about it. So, as you know that, beta, आज if we talk about people today, we don't have free time. हर किसी से पूछते क्या कर रहे हो यार, बिजी हो. आज आप मुझे यार आज बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया, आज मिलते नहीं हो, बिजी हो. तो वही है, we all have busy lives today. Okay, and we have many things to do. So what happens when we are busy? We miss out joys and beauty that nature has. So you have to write your thoughts whether being busy means to miss the joys and beauty that nature has or not. क्या जब हम बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं, क्या हम नेचर को मिस करते हैं क्या, या नेचर में जो जॉयज़ है, ब्यूटी है, क्या उसको हम मिस आउट करते हैं? क्या हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर देते हैं तो कैसे, अगर नहीं देते हैं तो कैसे नहीं देते हैं? तो यू हैव टू राइट दैट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, इट इज़ इमेजिन सेक्शन. तो इमेजिन सेक्शन में हमेशा बेटा एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जो इमेजिनरी सिचुएशन होती है, जो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं होता है, मगर इमेजिनरी, यहाँ पे हम इमेजिनेशन से काम लेते हैं. ठीक है, लेट्स सी. यू क्लोज योर आइज एंड सडनली, like Alice in Wonderland, you find yourself in a forest so different from those you have seen. Alice in Wonderland जो है बेटा, ये बुक लिखी है लिविस कैरोल ने. ठीक है, लिविस कैरोल, LEWISCARROL. लिविस कैरोल ने Alice in Wonderland लिखी है. तो you might have heard about it. Alice is actually a small girl and she gets lost in a wonderland. When she opens her eyes, she finds there are strange things in that wonderland, जो बहुत अजीब होती है. तो लाइकवाइज फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आंख लग गई, आपको नींद आ गई, अलग से अचानक से आपने आंख खोली, तो क्या आपने खुद को कहाँ पे पाया? एक अजीब गरीब लैंड में, जैसे एलाइस इन वंडरलैंड. ओके, और यहाँ पे एग्जाम्पल है, यू फाइंड योर सेल्फ इन ए फॉरेस्ट सो डिफरेंट फ्रॉम दोज यू हैव सीन. फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिनेशन से काम लीजिए बेटा, आंखें बंद की, जैसे आप एक जंगल में बिल्कुल है, और जो जंगल है ये बहुत डिफरेंट है. यू हैव नेवर सीन सच अ फॉरेस्ट, इज वेरी स्ट्रेंज. नाउ यूज योर इमेजिनेशन एंड ड्रा. Now you have to use your imagination. Number one, you have to draw and write about this forest. You have to draw some pictures regarding, you have to draw the forest. You have to draw different pictures, different animals that are strange. Are you getting me? So this will just improve your imagination, okay? Now here is a section, before you read, here are some important points. So John Keats was a British poet, okay? And he was born in London, Moorgate, London. ठीक है बेटा? तो कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ आपको जॉन कीट्स के बारे में. एंड व्हाट इज दैट, लेट्स सी. ही हैज़ इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड हिस्ट्री. बचपन से ही बेटा लिटरेचर और हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था उसको, जॉन कीट्स को. ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली इन हिज चाइल्डहुड हिज पेरेंट्स डाई. तो देखिए इसकी लाइफ कितनी मिजरेबल थी. व्हेन ही वाज जस्ट ए बॉय, तो वी कैन सिंपली से ही लॉस्ट हिज parents in his childhood. Are you getting me? So when his parents died, he went to work with a surgeon. एक सर्जन था जो सर्जरी करता है, ठीक है, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होता है. he actually, in order to earn his bread and butter, he decided to work with a surgeon. Okay, now he began his medical career, but unfortunately he was not so much interested in medical career. Okay, now he wanted to become a writer. So finally he decided to become a writer, and he gave up his profession, his job in the medical field, and finally he became a poet. Then here are some famous writings of John Keats. It is given on your textbook, तो वो आप खुद देखेंगे बेटा, ठीक है, टाइम नहीं इतना. It is I stood tiptoe upon a little hill, sleep and poetry. ठीक है, और एक पोएम है, और एक फेमस वर्क है, on first looking into Chapman's Homer. ठीक है बेटा.
तो दिस ये कुछ राइटिंग से आप अच्छे से याद रखेंगे. So when we talk about this poem on the grasshopper and cricket, it was first published in 1817, याद रखिएगा. And it is one of John Keats's most loved poems. ठीक है बेटा. And this poem has 14 lines. This poem has 14 lines. तो कल जब हम स्टार्ट करेंगे मैं उसी टाइम बताऊंगा आपको. बेटा जिस पोइम में 14 लाइन्स होते हैं उसे कहते हैं सोनेट. क्या कहते हैं? सोनेट इज अ पोइम दैट कंटेन्स 14 लाइन्स. ठीक है. और एक बात, इस सोनेट में जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम इज स्ट्रिक्टली फॉलोड. याद रखिएगा, इन ए सोनेट राइम स्कीम इज स्ट्रिक्टली फॉलोड. ओके. सो वी कैन से दैट एज द टाइटल सजेस्ट्स, टाइटल क्या है? ऑन द ग्रॉसहॉपर एंड द क्रिकेट. तो इट डिनोट्स नेचर. तो नाउ दीज आर इंसेक्ट्स, स्मॉल इंसेक्ट्स. तो वी कैन जस्ट guess here that how serious and sensitive were these romantic poets. Even they did not ignore these insects. Are you getting me? Like grasshopper and cricket. So inshallah I will see you in the next lecture. That will be the second lecture of this unit with the poem. Till then, take care and fi amanillah.